Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Naheed Hamid, home teacher for class 1. Today we are going to start our first English grammar lesson. So welcome to DPS online classes. The topic of our lesson is use of a and an. In this lesson, we shall learn the following things: how to use a and an, identification of vowels. Before teaching you the use of a and an, let me tell you a story. The story of a and an. आपको स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है ना? तो चलें मैं आपको ए और एन की स्टोरी सुनाती हूँ. ए एंड एन आर ट्विन ब्रदर्स. दोनों जुड़वा भाई हैं. देखने में भी काफ़ी हद तक एक जैसे ही लगते हैं और दोनों को नाउन्स बहुत पसंद हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रेप क्लास में आपने पढ़ा होगा ना नाउन्स के बारे में. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. तो ए और एन उन्हीं नाउन्स को बहुत पसंद करते हैं. दोनों ही सिंगुलर नाउन को पसंद करते हैं. यहाँ तक तो इनकी पसंद एक जैसी, लेकिन इससे आगे एक फ़र्क है. एन सिर्फ उन वाउल्स को, उन नाउन्स को पसंद करता है जो वाउल्स से शुरू होते हैं, और ए सिर्फ उन नाउन्स को पसंद करता है जो वाउल से शुरू नहीं होते हैं. लेकिन इस फ़र्क के बावजूद ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं हैं, बल्कि प्यार से रहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपने बहन भाइयों से लड़ा नहीं करें, बल्कि प्यार के साथ रहा करें. डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी सुन के एक क्वेश्चन तो आपके जहन में आया ही होगा. व्हाट आर वाउल्स? So let me answer this question. Look at these alphabets. Look at these letters carefully. In these letters, A, E, I, O, U. These 5 letters are vowels. A, E, I, O, U are vowels. So let's move towards the use of A. Dear students, look at these pictures. Look at these words: book, flower, hat, strawberry. All these are nouns. All these are singular nouns. All these do not begin with vowels. That's why we have written A with them. A book, a flower, a hat, a strawberry. ऐसे वर्ड्स जो वाउल से शुरू नहीं होते, उनके साथ हम ए यूज़ करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द यूज ऑफ एन. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दीज वर्ड्स केयरफुली. अम्ब्रेला, इग्लू, एलिफेंट, apple, orange. All these words
are nouns. All these are singular nouns. And all these words begin with vowels. That's why we have written an with them. An umbrella, an igloo, an elephant, an apple, an orange. तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो वोल से शुरू होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं. Dear students, I hope you have understood the use of a and an. Let's check our understanding. Look at these words: I, boat, orange, apple, horse, ice, mango, onion, flower, umbrella, tree, bag. In these words, I, orange, apple, ice, onion, umbrella. These words begin with vowels. Now, look at these words: boat, horse, mango, flower, tree, bag. These words do not begin with vowels. Let's read the question. Write the words beginning with vowels A, E, I, O, U in the box 1. Write the words that do not begin with vowels in the box 2. Let's read the words written in box 1. I, orange, apple, ice, onion, umbrella. All these words begin with vowels. That's why we have written them in box 1. Let's read the words in box 2. Boat, horse, mango, flower, tree, bag. All these words do not begin with vowels. That's why we have written them in box 2. Let's solve another exercise. Fill in the blanks with A or N. Number 1. Harry has an owl called Hedwig. In this sentence, owl begin with vowel sound. That's why we have written an with it. 2. Mother put a sandwich and an apple in my lunch box. In this sentence, sandwich does not begin with a vowel. So, here we use A. And apple begins with a vowel. So, here we use an. 3. Rana feeds a stray dog and a cat every morning. इस सेंटेंस में स्ट्रे और कैट दोनों ही वाउल से शुरू नहीं होते, इसलिए दोनों जगह पे स्ट्रे और कैट के साथ हम ए इस्तेमाल करेंगे. 4. When Hira was in Africa, he saw an elephant and a zebra. In this sentence, elephant begins with vowel. That's why we have used an here. But zebra does not begin with a vowel. That's why we have used a with it.
Number 5. It was raining, so Noman carried an umbrella to school. इस जुमले में अम्ब्रेला वॉल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमने एन यूज़ किया है. Dear students, it's the time for home assignment. A. Fill in the sentences with A or N. Zoha has dash orange raincoat and Rick has dash grey one. 2. The monkey sat on a tree and ate dash banana. 3. Lala had dash oatmeal cookie and dash cake. 4. Tom likes dash egg and milk for breakfast. 5. Dash emu is a very large bird. B. Fill in each blank with A or N. Dog, apple, sister, cake, elbow, bell, olive, ice, car, uncle. You have to use A or N with all of these words. That's all from my side. Take good care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.